फिर हम ये लाइव स्ट्रीम शुरू करेंगे। जी हाँ, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस चैनल पर, ब्रॉट यू बाय डेफा न्यूज। गला थोड़ा खराब है, कोई बात नहीं, चलते रहता है। बहुत बहुत पोल्यूशन है यहाँ पे एनसीआर में, बट द शो मस्ट गो ऑन। तो दोस्तों, कल के रिजल्ट के बाद, यानी कि न्यूजीलैंड के 5 विकेट जीत के बाद अगेंस्ट श्रीलंका, न्यूजीलैंड आर effectively into the semi-finals of the World Cup, because the situation facing Afghanistan in today's match against South Africa and then tomorrow for Pakistan at Eden Gardens against England is improbable. Afghanistan have to win by some 400 and some massive target. आज वो नहीं होगा। और पाकिस्तान के लिए भी मुद्दा जो है वो बहुत 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 गंभीर है। It is mathematically impossible. I think they, if they bat first, they have to score 300 and then they have to bowl out England for 13 or something insane like that. If they score 350, then they have to bowl them out for 62. अगर 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 ये पहले फील्डिंग करते हैं तो इंग्लैंड को 50 पे ऑल आउट करना पड़ेगा, और 50 रन का टारगेट 2 ओवर में करना पड़ेगा। जो भी है, इट इज utterly impossible for Pakistan. So yes, as of yesterday's results, the expected semi-final is confirmed. It's going to be India versus New Zealand at the Wankhede, and then South Africa versus Australia at Eden Gardens. क्यों मैं आज थोड़ा पाकिस्तान टीम के बारे में बात करना चाहता हूं? Because there seems to be this narrative that I'm seeing on social media. इनके कुछ पुराने players भी कह रहे हैं कि it's unfair, certain things have been stacked against us. कुदरत का निजाम, कुदरत का Karishma, जो भी है, why does the Pakistan narrative have to come down to? And I'm not saying every single Pakistan cricket fan is doing this. Wasim Akram has been very, very honest and very, very forthright in his shows on A Sports. But there's a lot of Pakistani media people saying things. Social media is a buzz, and I guess social media should not be taken seriously. But point here, beyond the mess right now, why does it always seem that Pakistan teams need some divine intervention to get them out of a jam? ये 2019 में भी हुआ था. They had to win the last 2 matches. It came down to net run rate. I'm just saying, टूर्नामेंट जो है दोस्तों, वो स्किल, कला, अहमियत पे जीते जाते हैं। वो कोई कुदरत का निजाम, कुदरत का करिश्मा, इस पे नहीं जीता जाता। If it's 2023 and you're still believing that some divine intervention is going to get you into the World Cup semifinals, then you're not here to play cricket. और देखिए, पहले भी कह चुका हूं, this is the weakest Pakistan team that I've been watching in 28 years ever to go to a World Cup. इसमें कोई एक भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर मेरे हिसाब से नहीं है। माफी चाहूंगा, बाबर आजम दिखते हैं वर्ल्ड क्लास है, but unfortunately it seems like the volume of runs or the weightage of runs or the opposition and conditions with which he scores the majority of his runs have not translated into the kind of batsman slash captain that a Pakistan needs coming into a World Cup. Shadab Khan, माफी चाहूंगा, अगर वो आपके बेस्ट स्पिनर है तो भैया आपके पास स्पिनर्स नहीं है। Kusama Mir, Mohammad Nawaz, they're not 50 over spinners who can consistently get the job done. नसीम शाह के बारे में बहुत कह चुके हैं कि उनकी उनकी गैर हाजिरी में हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी पे क्या असर पड़ा है। But again, Haris Rauf, you cannot call yourself a Pakistan fast bowler if you do not have that most vital of assets that the most brilliant of Pakistani fast bowlers down the years have always managed to produce. No one else does the Yorker like Pakistan fast bowlers. Haris Rauf does not have a Yorker. It's been argued that he is the enforcer, that his job is to enforce things as first change, but you cannot be a one trick pony. You cannot be a one dimensional bowler. The abject performance of Haris Rauf, the abject performance of Pakistan's spinners, the abject performance of Babar Azam, all this has led to Pakistan, to my I'm not surprised at all. I had said they will not get more than 6 in the standings. They might end up still at fifth or sixth, depending on how results go. And it would not surprise me at all. Um, One more thing I'll say before I get to the to your comments. पाकिस्तान टीम, होता क्या है दोस्तों, आपको थोड़े एसोसिएट लेवल प्लेयर्स या थोड़े कमजोर टीमों के सामने, इफ आई कैन यूज दैट टर्म, आपको अपना नेट रन रेट बूस्ट करना पड़ता है इन वर्ल्ड कप्स में। एंड अगेंस्ट अफगानिस्तान, Pakistan, to my mind, had no business losing that match after getting to 280 odd. You should have beaten Afghanistan with full respect to what Afghanistan has achieved. आपको अफगानिस्तान के सामने नहीं हारना था। आपका नेट रन रेट बहुत कमजोर है उसके बाद। और पाकिस्तान excuse me, पाकिस्तान का जो पहला मैच था अगेंस्ट नेदरलैंड्स, like I said, you're supposed to boss these slightly weaker teams. You're supposed to cash in. You're supposed to maximize. You're supposed to improve your net run rate. ऐसे मैचेस का मकसद ही होता है बड़े टीमों के लिए कि आप अपना नेट रन रेट बेहतर करें। पाकिस्तान ऑल आउट हुई अगेंस्ट नेदरलैंड्स, and that I think is where they actually shot themselves in the foot. They had pretty much one fast bowler, 3 batsmen, no spinners coming into this World Cup.
I feel for the Pakistan fans, but do not go down that narrative of excuses, कुदरत का निज़ाम and all that mumbo jumbo. आपकी टीम इसलिए सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि एक तो बहुत खराब टीम सेलेक्टर्स ने यहाँ भेजा. Like I said, the worst Pakistan team that I've seen ever sent to a World Cup. It just didn't have the skill. And frankly, the conditions were not very different from what they would get in Pakistan. So I'm kind of surprised that the team struggled this much. Babar was did not show up as a captain, did not show up as a batsman, a massive letdown. But overall, selecting the 15 chosen for this World Cup by the PCB did not really have what it takes to compete consistently, even in these overall flat conditions. And then, like I said, when you make some wrong calls, twice Babar Azam made the wrong call at the toss. You let your net run rate slip against Netherlands. You really did damage to your net run rate in that loss to Afghanistan. And no surprises, you have not failed to qualify for the semifinals. चलिए अब आते हैं आपके कमेंट्स पर. दैट वाज माय इंट्रो स्लैश रैंट आउट ऑफ द वे. लेट्स सी कि आप लोग जो मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, आपको क्या कहना है कल के रिजल्ट के बारे में और पाकिस्तान की स्थिति के बारे में. रियली नॉट मच गोइंग ऑन फॉर द पाकिस्तान टीम. एक सेकंड में दूसरे अकाउंट पे लॉग इन हो चुका हूं. आई जस्ट क्विकली स्विच फ्रॉम माय अकाउंट, माय यूट्यूब अकाउंट टू द क्रिकेट चैनल. जेड कह रहे अगर साउथ अफ्रीका को हरा देते तो क्या साउथ अफ्रीका नंबर 2 से नंबर 4 पे आ सकती है. नहीं, आई थिंक इनका नेट रन रेट बहुत बहुत बेहतर है, तो नहीं 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 होगा ना, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ऑन 12 पॉइंट्स. नो, नहीं होगा, नहीं होगा. शुड इंडिया बी वर्ल्ड ऑफ न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स? यस, इंडिया शुड. हेलो जय भाई, सेमीफाइनल देखने स्टेडियम में जाओगे क्या? बिल्कुल मैं जाऊंगा. विपुल कह रहे हैं पाकिस्तान रीच सेमी ओनली वन टाइम इन दिस सेंचुरी. दैट इंडिकेट्स कुदरत का निजाम इज नॉट इन देयर फेवर सिंस लॉन्ग. दिस ओनली इंडिकेट कुदरत वांट हाई टीआरपी फॉर नॉन. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. पाक को जीतने रन से डिफीट करना होगा इंग्लैंड को सेमीफाइनल में जाने के लिए. अगर पाकिस्तान 300 बनाती है तो इंग्लैंड को 13 रन पे ऑल आउट करना पड़ेगा. अगर जो पाकिस्तान 350 बनाती है तो दिल हैव टू बोल देम आउट फॉर 60 के करीब. अगर जो इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो पाकिस्तान को इंग्लैंड को 50 पे ऑल आउट करके 50 का टारगेट 2 ओवर में चेस करना पड़ेगा, यानी कि चांस ही नहीं है. कुदरत का निजाम बैंगलोर के हैवी ट्रैफिक में फंस रह गया. सही बात कहा यही भाई. अब इस न्यूजीलैंड को फेस करने से डर लग रहा है. थोड़ा लगना चाहिए, बट कोई बात नहीं, अपनी टीम बहुत बहुत अच्छी है. मनीष कह रहे कुदरत का निजाम का फोटो वायरल हो रहा है नेट पर. दैट क्लाउड मिडिल फिंगर. करेक्ट करेक्ट, आई हर्ड अबाउट दैट. नो कुदरत का निजाम, नो पार्टी फॉर पाकिस्तान. बिल्कुल सही कह रही हो. Are we going to see football score against New Zealand and semi India? No, no, we won't. Uh, Pakistan has to defeat England by 276 runs if they bat first, and if they bat second, they need to exactly score 300. You need to get them all out for 13. Not happening. सुबोध कह रहे हैं सर पाकिस्तान का कुदरत का निजाम का क्या हुआ. गुड टू इंटरेक्ट विद यू आफ्टर लॉन्ग टाइम. बस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऐसा कोई चीज है ही नहीं. आई थिंक एसए विल फेस एनजेड इन द फाइनल एंड एसए विल विन द वर्ल्ड कप. Wow, that's a bold prediction. That'll be great, but I think I'm going to stick by my pre-World Cup tournament, India Australia final, India to win. I had info yesterday. Rain, Bilkul, rain did not show up. That's very, very good. Very, very good for New Zealand that rain didn't come. I love it. I think New Zealand, yes, they were very sloppy in losing 4 matches, but good that they're there instead of Pakistan. Pakistan don't deserve to be there, and I don't think Afghanistan also deserve to be there as well. आकाश पंचाल कह रहे पाकिस्तान इंग्लैंड में से कौन 2 पॉइंट लेते हुए लग रहा है. पाकिस्तान ले भी लेते तो क्या फर्क पड़ेगा. They're not going to the semi-final, but I think England will win tomorrow. New Zealand also has Kudur Nizam. Do you think Babar is one plan captain? I think Babar is a no plan captain. Was promoting Rizwan to 4 a mistake? No, I think 4 is okay because he normally opens in T20s. I would have rather had Rizwan open, but no, I think 4 was fine. Do you think this skeletal structure of Pakistan isn't suitable? It's not suitable at all. Their domestic system is broken. They depend too much on the PSL. You see Babar being sacked? I do. From the one-day captaincy, I do. Rohitab, I do. ऋषभ कह रहे हैं और पाकिस्तान सेमी में आ गया तो इससे कुदरत नहीं नहीं वो तो आएंगे नहीं. What I believe is the Pakistan position in World Cup is only opposite to India. Since India always had great batters, they even market made their bowlers hype more. Uh, well, Pakistan cricket is so far behind that right now they're nowhere near. I mean they're struggling to beat Afghanistan, so I think they're too far behind India. If Pak really qualifies, nahi hoga. How can they chase 50 in 2 overs? How can they bowl out England for 13 runs? Nahi hoga. They're not going. It's mathematically impossible. जे भाई ये 15 मेंबर्स की टीम ही क्यों सिलेक्ट करते हैं. कम से कम 20 नंबर होने चाहिए. होंगे. आज हम सुन रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2 साल बाद शायद T20 फॉर्मेट में हो. देखिए व्हाइट बॉल क्रिकेट को बदलाव की बहुत जरूरत है. आई फर्मली बिलीव the 15 member squad rule will change 4 years from now. And I think we even might be looking at a 40 over World Cup.
4 years from now. Rahul कह रहे हैं sir Pak has played same number of semis as Kenya has in last 6 ODI World Cups. That's why I said they're not a good one-day team. सर ये सुशांत मेहता इंडिया का वैसे हबीब अरे डोंट टेक हिम सीरियसली यार पहले भी कह चुका हूँ सुशांत इज नॉट अ क्रिकेट रिपोर्टर ही वाज अ बॉलीवुड स्लैश एंटरटेनमेंट रिपोर्टर बट ठीक है हालात इंसान को अजीब चीजें करने और कहने पे मजबूर करता है सबूत न्यूजीलैंड का फाइनल मैजिक हो सकता है बट आई थिंक इट्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया यस आशीष मणि तिवारी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इज फेवरेट आई एग्री आई थिंक दे आर द फेवरेट्स India should be conscious enough not to be complacent. No, this Indian team is anything but complacent. Believe me, Shubhajit, especially after losing Hardik Pandya, complacent is not one word they're going to use. A bad start with the bat or ball, you said bowl, you meant ball, should not decide the fate of the match. We have players who can claw back. Bilkul, I, I see India winning the World Cup. So everything has fallen into place so well. It's a fantastic bowling attack. It's a very good batting attack. हाँ रिस्क है सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के सामने वांकड़े स्टेडियम पर केवल 5 बॉलर्स खिलाने में देयर इज नो 6 बॉलर बट द फाइव हैव बीन डूइंग सो वेल दैट आई थिंक it'll just be another day in paradise. I saw Adam Gilchrist's interview on Australian TV. He said the Indian bowlers are performing. See, Glenn McGrath has been working. I was there. I was there in Chennai 2013 की बात है ये 12 13 जब डेनिस लिली बहुत कुछ 20 साल के बाद 25 साल के बाद वहां से रिटायर हुए और ग्लेन मगरा वहां पे आए थे बट लेट्स अंडरस्टैंड द एमआरएफ पेस एकेडमी हैज नेवर प्रोड्यूस्ड एनी नोटेबल फास्ट बॉलर इंडिया के फास्ट बॉलर जो हैं वो एमआरएफ पेस एकेडमी से नहीं आए हैं इट इज अ प्राइवेट एंटिटी विथ इट्स ओन इंटरेस्ट लुकिंग टू बूस्ट grassroots level bowling but कोई भी अहम फास्ट बॉलर वहां से नहीं आया है तो एडम गिलक्रिस्ट कैन से व्हाट ही वांट्स ही इज एंटाइटल्ड टू हिज व्यूज बट द फैक्ट इज दैट इंडिया का ये जो बॉलिंग लाइनअप है ये कभी एमआरएफ एकेडमी जाकर ग्लेन मैग्रा के साथ काम नहीं कर चुकी है तो बोलने दो गिलक्रिस्ट को कोई बात नहीं बेसिकली दुनिया को हजम नहीं हो रहा है कि इंडिया के पास विश्व के बेस्ट फास्ट बॉलिंग लाइनअप है आजकल तो कोई बात नहीं बोलने दो So I think no country is dominating all three formats. That's right. No one does. Pakistan dominates T20s, but they're not really doing much. Again, India also dominate Test cricket. That's why they got to batti gayi. That's why they got to the final. But yeah, I get your point. There's not one three format team right now. Rest all Pacers and Netherlands match. नहीं क्योंकि अपने पास फिर bowler है ही नहीं कोई. How can India handle the pressure there is semis and finals? Karan, I think the fact that they're 8-0, it says that they're doing pretty well when it comes to pressure. हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा. Sir, where are you from? भाई लोग प्रकाश सबर को जवाब दीजिए. Do you think New Zealand has a weak bowling attack? Not weak, but they've been depleted. कल का मैच वो पहला मैच था. It was the first match in the whole World Cup. It was New Zealand's last group stage match. यानी कि इनका 9 मैच था ये 9वां मैच था when they could call on their first choice 11. They've been severely depleted by injury. That's why I feel coming back from 4 matches in a row, lost with a depleted bowling attack, hats off to them. It's got a very good bowling attack, but it's been hit by injury. Any change you've seen playing 11? Not at all. Ashutosh, Australia, SA, New Zealand are apart from 1 or 2 match, not good at chase. That's true. We need to bat first. Bilkul, India has to bat first. It's a bat first World Cup. Do you think Pak players were distracted with being political activists instead of players? Probably, Ashutosh. Yes, I would say probably to some level. Yes. अतुल कह रहे हैं पाक हैज टू डिफीट वी डिस्कस दिस कुछ भी कहो नहीं होने वाला है नहीं होने वाला है अच्छा हजरत रजा अभी भी बोल रहे हैं अफगान वाज गिवन अरे वो सेम बॉल वाला तो आपने वसीम अकरम का जवाब नहीं देखा होगा brilliant analysis in 3.5 minutes by Wasim Akram to people like Hassan Raza who clearly are doing it just for the TRPs and he said ये क्या पी रहे हैं हमें भी पिलाइए वो शरबत quantify. Pak has started a campaign hinging all their performance on that. Yeah, Pakistan can say what they want to do. The PCB was complaining before the World Cup. I'll say it again. अगर आप लोग भूल चुके हो, PCB को पहले से मालूम था कि ये टीम चेन्नई में मैच तो नहीं जीत पाएगी. That's why they wanted all the matches shifted out of Chennai because Chennai the ball turns. पाकिस्तान के पास कोई spinners नहीं है और पाकिस्तान के पास spin खेलने वाले बल्लेबाज नहीं है. They can complain all they want to. The fact is the PCB is to blame for sending such a terrible team to the World Cup. Akash, should SA bowl first if they win to get the ghost out of chasing? No,
लुक दे वन इस साल पूरे वनडेज को अगर देखें तो 13 बार साउथ अफ्रीकन टीम को चेस करना पड़ा और 7 बार हारे, 6 बार जीते. Batting first, I think it's 14 out of 20 or something. Yeah, 14 out of 20 they've won and 6 out of 20 they've lost when chasing. So again, you would assume that they would want to do it, but इनको जो झटका लगा इंडिया के सामने 80 all out, I think they'll be pretty keen to bat first and hope that they get to win the toss against Australia too. Hassan Raza is getting the fame he doesn't get usually, so he's overdoing it. Bilkul, Hassan Raza, if your greatest claim to fame until you made that banal comment about India and two balls, if your greatest claim to fame was apparently making your test debut before 15, and then later on, a few years later, the PCB had to retract that, and now it's these banal statements. आपने कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया, with all due respect. शशांक फ्यूजर क्या बात है 449 शुक्रिया मेरे दोस्त थैंक यू फॉर द सुपर चैट लव यू कुमार शानू के सुपर फैन हैं जय भाई मेरे तुम्हारा से ज्यादा क्या बात है भाई कहां से कहां लेके गया बात को बहुत बहुत खूब थैंक यू शार्दुल प्रसिद्ध कुलदीप अश्विन जडेजा bowling lineup for last league match I don't think look India's got a 6 day gap इनको bowling चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है कभी कभी आप कुछ चेंजेस करते हो जबरदस्ती तो वास्तु आपका बिगड़ जाता है I don't think. I mean, yes, they could probably rest one of the fast bowlers, but I think छह दिन का gap मिल गया है. दिवाली मनाइए, तोड़िए Netherlands को. Your final contenders. The same thing I've said since the month of January when the new year started. Australia versus India. नमस्ते प्रदुम, कैसे हो आप? Guys, I have 3 minutes to wrap it up because my son's got to get back on this very same system behind me for his online classes. So I'll wrap it up very quickly. Afghanistan has achieved a lot in this World Cup by making it to Champions Trophy. They could have been in the semi-finals if they defeated Bangladesh. बिल्कुल स्वप्निल बिल्कुल मैं पहले भी कह चुका हूँ वो जो हारी थी ये टीम बांग्लादेश के सामने that's the reason why they're not there. Sir, tell us who will win the World Cup. I said it in January and I'll say it again. India will win this World Cup. चलिए इसी बात पर इस शुभ सवाल पर शुभ जवाब पर मैं इस लाइव स्ट्रीम पर विराम लगाता हूं. Have a great weekend. I will see you with more programming on this weekend. Have a great Friday. Have a great Saturday. Have a great Sunday. See you all. Take care.